चलो नाउ नेक्स्ट टॉपिक आपका, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है, दिस इज समथिंग न्यू फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है, विच वी हैवंट टच एनीवेयर विद एनी अदर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपका जैसे कौन कौन से प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस साइकिल, ठीक है, वी हैव प्रोडक्ट लाइन ऑफ अ बैंकर्स, ठीक है, डिपॉजिट प्रोडक्ट लाइबिलिटी दिस, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स आपका, ठीक है, स्टेजेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट एरियाज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वन। चलो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। So when it comes to the product cycle, it include 4 stages. One is introduction आपका, ठीक है, the very first stage is introduction. Then we have आपका growth, then we have maturity, and then we have decline. It is similar to our economic cycle, ठीक है, so it also follow that same sequences and all, ठीक है, so it is not a linear approach. So it is like initially this is the stage where we are introducing that particular one. This is where we are having some sort of growth, we are capturing the market and all, then it reaches to a saturation point, maturity, then after that it start declining. If you want to maintain this maturity, so you have to come up with some sort of innovation in your product, you have to add that particular one. Now the features aapka that you have to remember, right? Chalo, so अगर हम आते हैं आपके कॉन्सेप्ट पे, so introduction stage आपका, this is the initial stage when product is introduced to the market, sales volume is low, these are the features that you have to remember, ठीक है, and revenue may not cover production, marketing and servicing cost. The product is new to the customer, so take time to gain awareness and acceptance. Focus on creating product awareness and attracting early adopters. The second stage is growth stage. Introduction, then growth. Sales volume start to pick up as customer awareness increase. Product may start break-even points or may break the break-even points and start generating profit for the organization. Consumer interest grows and competition may also start entering the market. Competitors will also start entering in the market because we cannot have any sort of monopoly. Marketing efforts focus on building market shares and expanding customer base itself. Clear? The third stage is आपका maturity. Sales volumes are all time high, ठीक है, in this particular one. Product reach to the peak of popularity, ठीक है. There are wide range of customer base resulting in higher sale and profit. Competitors offer similar product at they start doing the price penetration in all, ठीक है. Price competition may be intensified. Marketing efforts shift toward customer retention. Then we have differentiation and maximizing the profit itself. Then the final one is आपका stillness or saturation stage. Due to the competition and availability of better product, sales growth slow down, stillness set in, and sales reach to the saturation. Business and profit stabilize, customer might become indifferent, and bank must find way to resonate the product to prevent the decline. That means you have to come up with some sort of new idea so you can sustain in the market itself. Okay? So these 4 stages, the fifth one आपका basically as per your book or as per the others, we have 4 one. Okay? So this is the stage आपका saturation is the stage where we have to manage things. Like we can have 2 ways after this maturity stage. Else we can start declining, or else we can innovate and we can achieve a new milestone also. So the product become less attractive and sales volume start declining. If not managed, the product might face some eventual discontinuation. Bank can attempt to review the product through the risk positioning or आपका discontinuation. Risk positioning is something आपका we are making some add-ons in the existing product and we are doing some sort of innovation, or else what we can do, we can discontinue that particular product itself. Understood? So these are the 4 stages, very very important one. So please do take care around these things and बहुत अच्छे से practice कीजिएगा, definitely it is going to help you out. Now the product cycle. Product cycle is something means when we are coming with a new product. Let's say your bank is coming with a new any आपका XYZ product. So that overall आपका product building things which generally have these many 5 stages. These many stages. First one is idea generation. Idea means like when it comes to the business, it is all about the problem solving. So we got like, let's say there are so many customers, they are having some sort of problems.
So we got an idea to solve that particular problem. That means you have a business idea, and if you'll execute that particular one, and if you are the very first one, so you are going to have a competitor's edge also. Okay, so idea generation. Okay, what we are going to deliver to our customers, okay, and what problems we are going to solve in the market. Then आपका screening. Let's say we have multiple ideas, then we will go for the best one. At the time of screening आपका what we will do, let's say we have 3 ideas, okay, and this idea A, which is like completely new, and this is something which is aligned with our banking. ठीक है, जैसे हम लोग बैंकर हैं, तो अब कोई जरूरी नहीं है ना कि like we can start a restaurant chain and all. No, that is maybe that is profitable, but that is not our cup of tea, right? So that is the thing. ठीक है, यहाँ पे we'll do that kind of things. Concept testing आपका, now this is something which is we generally do nowadays with the help of regulatory sandboxes. ठीक है, so जहाँ पे we are testing that particular one at a small level. If that work, we will roll out that particular product in the market. ठीक है, then we have business and market analysis, and आपका product development testing and commercialization, and we roll out the product, and that then it will enter to the आपका initial update आपका. ठीक है, हाँ, ये हरीश सर को कोई बताओ यार कहाँ मिलेगा पीडीएफ. ठीक है, सेम क्वेरी आपका सर का है. चलो सर, आपको पीडीएफ आपका इफ यू आई होप यू आर पार्ट ऑफ एनी टेलीग्राम ग्रुप. ठीक है, अगर आप टेलीग्राम पे है ना, तो वहां पे आई हैव शेयर द ऐप लिंक ऑल्सो. इफ यू गो टू द आपका फ्री मटेरियल सेक्शन, यू विल गेट ऑल पीडीएफ. आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड नंबर ऑफ पीडीएफ टुडे इटसेल्फ. The last time what I have done, the unit wise MCQs, that 11 or 12 hours compilation, that is already there. Today itself I have uploaded all. ठीक है, module wise you can see. ठीक है, and concept PDFs are also there, and I'll be uploading these. आपका जो morning में हुआ था, कल हुआ था, वो भी वहाँ पे है. ठीक है, चलो. So आपका please do take care around this particular one, guys. Now very important. ठीक है, so generating new product idea from the market research, customer feedback, and employee suggestion and all. These are the areas. Screening आपका, all collected ideas are evaluated using specific criteria like, is there a real need for the product, does it improve the existing product, or can the current infrastructure support that particular one, does it fit into the existing business or require a new business line. ठीक है, so these are some areas which are generally part of this one. ठीक है, so ये आपका पहला रहेगा. So key stages में आपका these are the 2 stages. Third one आपका business and market analysis. The stages evaluate the financial and marketing viability of the product through the cost benefit analysis आपका. ठीक है, हम लोग करते हैं ना कि इतने नंबर ऑफ सेल करेंगे, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, AFM आपका. ठीक है, याद होगा ना आप लोगों को. ठीक है, सो वेयर व्हाट वी हैव डन कि लाइक इफ विल सेल ऑन दिस पर्टिकुलर प्राइस, इफ विल सेल टू दिस नंबर ऑफ कस्टमर्स, दिस विल बी आवर ओवरऑल सेल्स. ठीक है, दिस इज द कॉस्ट which we are going to bear on this particular one. So this will be our break even point, this will be our margin of safety, वो सारी चीजें. ठीक है, then आपका product development, testing and commercialization, that is the final stage. Then we roll out the product in the market, and it will have 4 stages. आपका product growth, then introduction, growth, आपका maturity, and आपका decline. Understood guys? तो ये सारी चीजें आपका यहाँ से. ठीक है, प्रोडक्ट इवेल्युएशन एंड प्रोडक्ट पॉलिसी इन बैंकिंग. ठीक है, तो अब ये देखो बैंकिंग का रेफरेंस आपका दे देगा, तो दैट इज बिट इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो दीज आर द एरियाज. जैसे जेनरिक प्रोडक्ट आपका सेविंग अकाउंट्स और इनकी तरह जो कोर प्रोडक्ट ट्रेडिशनल बैंकिंग का जो पार्ट है. ठीक है, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट आपका. ठीक है, इनकॉर्पोरेट कस्टमर एक्सपेक्टेशंस आपका, सच एज पासबुक एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स. ऑगमेंटेड प्रोडक्ट आपका, enrich with the additional feature beyond the customer expectations like multi-branch access, check facilities, and all these kind of things. Potential product आपका represent the future possibilities leveraging innovation like cardless ATMs and all these kind of things. ठीक है, again very important one guys, please do take care around this thing. ठीक है, so समझ में आया. यहाँ से important हमारे पास 3 सब टॉपिक. पहला प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल, प्रोडक्ट साइकिल आपका. सेकेंड वन इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट आपका स्टेजेस, एंड थर्ड वन इज दिस आपका. ठीक है, सो प्रोडक्ट इवैल्यूएशन आपका ओवरऑल इफ वी रेफर टू द बैंकिंग सिस्टम, एंड दीज आर द एरियाज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. दे कैन आस्क यू लाइक कौन सा सही मैच है वो बताओ. ठीक है, व्हेन विल डू द आपका यूनिट वाइज MCQs ना, I'm going to practice like similar setup, I'm going to come up with a similar set of question, तो जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा. ठीक है, प्रोडक्ट पॉलिसी आपका बैंक प्रोडक्ट के लिए. सो फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट इवैल्यूएशन एंड प्रोडक्ट पॉलिसी. ठीक है, इवैल्यूएशन इज दिस एंड आपका प्रोडक्ट पॉलिसी. ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है आपका. और वेल स्ट्रक्चर पॉलिसी विच कंटेन
प्रोडक्ट लाइन अप्रेजल, ठीक है. सो इवेल्युएटिंग प्रोडक्ट ऑफरिंग्स टू इंश्योर रेलिवेंस, ठीक है. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, डिफाइनिंग द फीचर्स दैट सेट प्रोडक्ट अपार्ट, ठीक है, लाइक जो एग्जिस्टिंग है उनसे अलग है, ठीक है, और इवन दो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे अलग है, ठीक है. प्रोडक्ट पोजीशनिंग आपका स्ट्रेटेजिकली प्लेसिंग प्रोडक्ट टू टारगेट कस्टमर्स. ब्रांड डिसीजनिंग आपका, ठीक है, स्टेब्लिशिंग रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड आइडियाज, मार्केटिंग आइडियाज. पैकेजिंग कैसे होना चाहिए, एंड आपका न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इनोवेटिंग टू मीट इमर्जिंग नीड एंड मार्केट ट्रेंड्स आपका, ठीक है. सो वेरी इंपॉर्टेंट वन, प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक है. यस, नाउ व्हेन इट कम्स टू द प्रोडक्ट आपका, हाँ, देर आर सम एरिया जैसे वी आर कवरिंग वन बाय वन, ठीक है. लाइक मॉड्यूल ए वी हैव ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी. फॉर श्योर यू गाइज आर गोइंग टू फेस क्वेश्चन अराउंड द ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, आपका, बिकॉज आपका नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसके अलावा आपका ग्रॉस प्रॉफिट, या फिर जो अदर एरियाज हैं जैसे ROE एंड ऑल, ठीक है. फॉर श्योर वन केस स्टडी फॉर 2 मार्क्स बेस्ड ऑन दोज पर्टिकुलर वन. यहाँ पे अभी तक हम लोगों के पास सिर्फ आया है फॉयर, ठीक है, अभी तक फॉयर, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन विल बी देयर बेस्ड ऑन मैस्लोज हायरार्की, और आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन और द अदर एरियाज आल्सो, ठीक है. रोहित सर वेरी वेरी गुड इवनिंग. चलो, सो डिपॉजिट प्रोडक्ट आपका, एंड वी हैव आपका डिपॉजिट प्रोडक्ट विच इंक्लूड आपका डिपॉजिट प्रोडक्ट और लाइबिलिटी प्रोडक्ट. सो डिपॉजिट प्रोडक्ट्स और लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स, सो like we generally take deposit from the customers which is liability on our bank balance sheet. So we have current accounts, आपका saving accounts and all, ठीक है. So they are like मतलब basic information है, because we have 2 back-to-back unit based on these particular, ठीक है. Term deposit आपका, जिसमें these are the demand deposit, term deposit, FD, RD and others, they generally comes under this particular category, ठीक है. Consider the following statement regarding bank product in retail banking, ठीक है. So bank products in retail banking, so they have given some sort of introduction to your bank retail banking products and all, ठीक है. So what will be your correct answer for this one? So a product in retail banking is a combination of tangible and intangible elements, ठीक है. A bank product must continuously satisfy customer need and want to remain relevant. True. Promotional strategies are more important than the product itself. No. Okay, this is not going to help. Okay. We need a balance between these two, and product itself is very important. Okay. So 1 and 2 आपका option A should be right answer for this particular one. ठीक है. Product is more important than the promotion itself. Correct है दोस्तों. चलो आगे. Next question on your screen. About the product life cycle, very very important one, ठीक है. So आपको product life cycle का जो हमने कल डिस्कशन भी किया था, ओवरऑल आपका जो कहीं ना कहीं जो इसके अराउंड जो डीलिंग्स आपकी हैं, जो चीजें हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. ओवरऑल साइकिल और द डेवलपमेंट ऑल्सो जस्ट आफ्टर दिस. सो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर? प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल आपका, ठीक है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट, इन इंट्रोडक्शन स्टेज, which is the very first stage, sales are high. No, sales are low because product is new to the market. Okay? So the statement 1 is itself wrong. Okay? And the growth stage, consumer awareness increase and product may start generating profit. True. The maturity stage is where sales volume peak and customer base is widest. So statement 3, when it comes to the statement 3 आपका, ठीक है. So maturity stage, we experience these kind of things आपका, ठीक है. The next one आपका, the saturation or staleness stage is it's marked by the decline in profit due to high marketing cost, ठीक है. Marketing cost is low in this particular one, ठीक है. So it is when it comes to the आपका your staleness stage or your saturation stage. We during the growth or after initial stage we do the marketing expenses and all. Yeah, this is also wrong. In the declining stage, if not addressed, the product may face complete withdrawals from the market. Yes, we have two options. Either we have to innovate or else we have to close that particular product. Okay? All product necessarily follow through the every stage. No, it is not necessary कि all product will follow the सेम फ्लो आपका, ठीक है. आपका इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, देन आपका मैच्योरिटी और पीक, देन आपका डिक्लाइन. नो, इट इज नॉट नेसेसरीली दे आर गोइंग टू फॉलो दैट पर्टिकुलर वन. दैट इज नॉट अ काइंड ऑफ थिंग्स विच ऑल प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू हैव दैट पर्टिकुलर वन. सो दिस इज रॉन्ग, ठीक है. सो 2 and 3 and 5, ठीक है. 2, 3 and 5
मीन्स ऑप्शन ए ओनली शुड बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन। करेक्ट है दोस्तों, ये आपके आंसर्स कहाँ हैं यार, ठीक है, ऐसे कैसे चलेगा, ठीक है। सो यू गाइज आर 100% गोइंग टू फेस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, और हमने कल आपका इसीलिए कॉन्सेप्ट समरी पहले करें कि जिससे थोड़ा सा आप चीजों को कर पाएं, ठीक है। अभी अगर मैं आपको मॉड्यूल मॉक दूंगा तो वहां पे तो आपको और भी दिक्कत हो जाएगा, तो थोड़ा सा अभी कुछ दिन बचे हैं, अच्छे से मेहनत कर लेते हैं। नेक्स्ट वन आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट एंड ब्रांडिंग रिटेल बैंकिंग आपका, ठीक है। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, इट जस्ट नीड योर अटेंशन, इट जस्ट नीड योर रीडिंग्स एंड ऑल। तो बताओ क्या होगा आंसर। What will be your correct answer, guys? So, RBI mandate that all saving bank account must allow unlimited withdrawals. नहीं, there is no such mandate from the RBI. ठीक है. Statement one is wrong. Next one आपका, the relationship between bank and saving bank account holder is contractual and fiduciary, where bank act as a trustee. ठीक है. Do bank act as a आपका trustee in this particular situation, guys? क्या होगा सेकंड स्टेटमेंट आपका, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा इस केस में ट्रस्टी नहीं बल्कि कौन सा रिलेशन था आपका, डेटर और क्रेडिटर्स, ठीक है। तो बैंक दे जनरली वर्क एज अ डेटर इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। स्वीप इन एंड स्वीप आउट फैसिलिटीज ऑफर्ड बाय बैंक अलाउिंग ऑटोमेटिक ट्रांसफर बिटवीन सेविंग एंड टर्म डिपॉजिट, ट्रू आपका पहला करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। इन बैंकिंग कॉर्पोरेट ब्रांडिंग refer to these strategies focus on enhancing recall and recognition of a specific product. Again आपका statement 3 is also, no sorry, statement 4 आपका corporate branding refer to the strategies focus on enhancing recall and recognition of specific, it should be आपका बैंक आपका, sorry, ठीक है, not specific banking product, even it should be around the entire bank. I'm little bit doubtful about this one, ठीक है। Augmented product required stronger marketing strategies compared to core products आपका, ठीक है। Ensure the success in the, हाँ बिल्कुल 100% root augmented product, if some special products are generally offered by the bank, so we have to create awareness, and for that sake like saving account everybody know, ठीक है, if it comes to the basic and others. But if you are coming with some differentiated products and all, so that will be required more marketing efforts and all, ठीक है। So this is also correct. Now 3 and 5 are correct, that means 3 and 5 are correct. Okay, so now we have two options, आपका D और आपका C. What will be your correct answer, guys? Everyone, क्या होगा correct answer आपका? I'm little bit doubtful about this statement 4 आपका ये area same. So, but your answer can be B or D आपका. It is D, guys. ठीक है. So statement 1 incorrect, incorrect. आपका statement 4 is also incorrect. ठीक है. Corporate branding refer to the promoting the bank, ठीक है, as a whole, ठीक है, promoting bank as a whole, not to a specific product. So people can recall the bank आपका, not to the specific product आपका. So that's why option D was the right answer for this particular one. Next one, consider the following statement related to BSBDA accounts, ठीक है। सो एंड स्मॉल अकाउंट्स, ये आपको पीपीबी में भी बहुत पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे भी वी डू हैव अ प्रोबेबिलिटी कि दे कैन आस्क आपका फ्यू क्वेश्चन अराउंड दिस पर्टिकुलर वन। क्या होगा आंसर बताइए जरा, अराउंड दी BSBDA अकाउंट, ठीक है। ये तो हमने बहुत बार आपका डिस्कस भी किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इतना टेंशन नहीं आना चाहिए। सो BSBDA अकाउंट्स कैन ओनली बी open within a minimum, no, there is no minimum balances required in case of BSBDA accounts, so this is wrong, ठीक है। सेकेंड वन आपका, BSBDA account are subject to KYC norms issued by RBI, ठीक है, 100% yes, ठीक है, यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं है। Small accounts can be only be open if the customer possesses at least one ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स आपका, नो स्मॉल अकाउंट्स के लिए इफ वी डू नॉट हैव एनी, लाइक ये किस केस में हम लोग लेके आते हैं जहां पे वी डू नॉट हैव एनी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल, ठीक है। सो दैट कैन बी ओपन विदाउट इवन अ सिंगल डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, ठीक है। फॉरेन रेमिटेंसेस आर नॉट अलाउड in small accounts under any circumstances, true. The maximum aggregate of credit in a financial year is 1 lakh, ठीक है, 100% true. Next one आपका,
If a small account holder failed to provide KYC documentation within 12 months, the account will be blocked permanently. True. BSBD accounts can be opened in non-CBS link branches but will require manual monitoring. ठीक है? Non-CBS नहीं, as such I guess we do not have any kind of qualification for this particular one. Any bank they can have these kind of things ना, or it is generally part of the CBS things all. ठीक है? So it should be like आपका, it should be like in must आपका CBS branches in itself. ठीक है? So 2456 means 2 4 5, okay, two options आपका C और D both are correct in this situation. ठीक है? Yes, हाँ, तो either you can go for C or C, D, both are correct in this situation. ठीक है? BSBD account must be open in CBS link branches. Okay, they are part of the only आपका CBS link branches and all. ठीक है? Next one, term deposit are not true. तो स्टेटमेंट अबाउट टर्म डिपॉजिट आर इनकरेक्ट है आपका. ठीक है? सो स्टेटमेंट अबाउट दी, हाँ बिल्कुल ठीक है आयुष सर, बिल्कुल गलती हो गया वहां पे ऑप्शंस में. ठीक है? सो सी एंड डी आर सॉरी टर्म डिपॉजिट एंड वी हैव टू फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका. तो क्या होगा करेक्ट आंसर? व्हाट विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस वन? ठीक है? टर्म डिपॉजिट इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है? क्विकली गाइस. So which of the following term deposit offer high interest yield based on the fixed period of deposit with interest rate depending on the deposit tenure? Same. First statement is true आपका. ठीक है? पहला statement correct है. पहला statement correct है ना हमारा. ठीक है? First statement में कोई issue नहीं है. ठीक है? Overdue, sorry, second one आपका overdue deposit are treated as demand deposit and earn the same interest आपका as saving account. Overdue deposit they cannot earn these आपका interest and all. ठीक है? Recurring deposit require monthly fixed contribution and the interest earned is paid out quarterly. No, it is again आपका, this is also wrong. ठीक है? So 2 and 3 are wrongs. Only statement 1 is correct आपका. ठीक है? Statement 2 is incorrect. Overdue deposit attract the interest rate applicable to saving deposits, first thing. And this one आपका interest on recurring is typically paid at the end of the term, not on quarterly basis and all. Correct है? चलो next one guys. अब बहुत सारे statements आपके सामने हैं and we have discussed all these statements in detail आपका. ठीक है? PPB में बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किए हैं. I want everyone please quickly go through these one. So what will be your correct answer for this one? Quickly. Which of the following option correctly describe the provision outlined in KYC guidelines under the Prevention of Money Laundering Act 2002 and associated rules? ठीक है? And we have to find out the correct statements. ठीक है? So अब statement wise अगर आप लेके चलेंगे तो भी बेहतर रहेगा. ठीक है? A bank is permitted to open an accounts in a fiction names. पहला ही गलत है आपका. ठीक है? In a fiction names. ठीक है? If a customer provide etiquette, no, that is not allowed. ठीक है? Second statement आपका statement 2 which is the customer identification process must be followed for all joint account holders and all must be subject to appropriate due diligence. 100% true. ठीक है? Then next one आपका bank are allowed to outsource the decision making process regarding compliances with KYC norms to third party agencies and all. ठीक है? The statement third is also wrong. ठीक है? Statement third is also wrong. ठीक है? They are not allowed. Next one आपका in case where the officially valid document does not include an updated address, customer must submit a utility bill or a municipal receipt as a proof address within 1 month. कितना होता है? At least आपका 2 months होता है. ठीक है? So this is also wrong here. The video based customer identification process VCIP is an alternative method for customer verification where the facial recognition and live आपका that GPS based system. ठीक है? Informed consent based audio visual interactions are used for the verification of customer details. True. As per the rule 11.4b, 104b, 114b, an individual opening an account with a deposit exceeding 50,000 must quote their PAN
except for minors whose guardian pen can be quoted true आपका ठीक है. Next one आपका under the eKYC process the unique identification authority of India can transfer KYC data that bank electronically to the bank electronically which considered a valid method again true ठीक है. So 2 5 6 7 2 option A only should be right answer for this one ठीक है. करेक्ट है. क्यों आंसर नहीं है इसका आपका सी ओनली कुछ लोगों ने लिखा है, कुछ लोगों ने आपका लिखा बी. वाई सो गाइस ठीक है. दिस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड. सो ये हमने आपका पीपीबी में पढ़ा है. पीपीबी में अगर हमें उसने अच्छे स्कोर नहीं दिए सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी जहां पे इफ यू रिवाइज द टॉपिक, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था ना, दीज आर द टॉपिक विच आर पार्ट ऑफ योर पीपीबी ऑल्सो. तो अगर आप उन नोट्स को एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लेंगे दे आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट ठीक है. चलो नेक्स्ट वन आपका अबाउट द अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस एंड केवाईसी कस्टमर प्रोसीजर्स आर करेक्ट. अगेन यू हैव 6 स्टेटमेंट एंड यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट्स आपका ठीक है. So account opening process and KYC, account opening process and KYC, and you have to find out the correct statement. ठीक है. First, in the centralized model of account opening, all stages from account creation to the issuance of the passbook, checkbook are done centrally. बिल्कुल सही ठीक है. First statement without any doubt correct. Bank can accept eKYC verification by a unique identification authority of India as valid process KYC verification under prevention of this true. Third statement आपका all bank regardless of their nature are required to open term deposit accounts centrally with a receipt being used at branch level. All banks regardless of their nature are required to open term deposit accounts centrally. No, it shouldn't be part of this one. This is handled at the branch level. KYC form must be obtained as an annexure to the account opening form, but they are not required to include details such as customer nationality and all. Again wrong आपका ठीक है. Next one आपका next statement, customer due diligence involve verifying the customer's identity and assessing their risk which is recorded in KYC form and customer threshold for the transaction is set accordingly. बिल्कुल सही ठीक है. Statement 5 is true. Statement 6 आपका Statement 6 the central KYC registry is maintained by Reserve Bank of India and bank must upload KYC of all individuals account open after 2017 आपका true ठीक है. And for आपका regulated entities or for the institution it is 2021 आपका ठीक है. So 1 2 5 6 ठीक है. 1 2 5 6 means option D should be right answer for this particular one ठीक है. क्या होना चाहिए था आपका आंसर? ऑप्शन डी ठीक है. डी करेक्ट है ना. हाँ यस. सो ऑप्शन डी इज द राइट स्टेटमेंट इन दिस पर्टिकुलर केस आपका ठीक है. ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हो पीपीवी में. थोड़ा कॉन्फिडेंस लाओ यार, ऐसे कैसे चलेगा ठीक है. चलो अगला क्वेश्चन गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. ये हमने कल ही पढ़ा है ठीक है. सो करेक्ट regarding new product developments and product cycle ठीक है. न्यू आई वॉन्ट 100% राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन और सबके आंसर चाहिए ठीक है. गलत होगा चलेगा बट आंसर करना बहुत जरूरी है दोस्तों. क्या होगा करेक्ट आंसर? सो सक्सेस ऑफ मार्केटर्स in enhancing long-term survival lies in accurately identifying the stage of product life cycle and preemptively launching a new product enter to the introduction phase during the decline of existing project. Statement 1 is true आपका ठीक है. Statement 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है. Product that are in the maturity phase of their life cycle cannot be replaced by a new product and as they continue to provide a steady revenue and customer base without innovation. No, this is 100% wrong आपका ठीक है. So if something or some product are at the maturity stage, so innovation is must. Otherwise we have to phase them out or else if you want to survive, so innovation will be required ठीक है. बिना innovation के नहीं चलेगा, outdated हो जाएगा ठीक है. Technological advancements such as transition from analog to digital media can lead to the phasing out products, but companies must innovate to avoid stagnation and maintain market leadership. True ठीक है. तो 1 and 3 are true.
So 1 in 3 means option B should be right answer for this particular one. Correct है? और करेक्ट है आपका, ठीक है. सो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन. वेरी गुड, वेरी गुड. बी है ना? यस. तो स्टेटमेंट 2 आपका विच इज इनकरेक्ट. इवन द इफ द मैच्योरिटी फेज प्रोडक्ट कैन बी रिप्लेस और आपका फेज आउट बाय द इनोवेशन. द मैच्योरिटी फेज इज नॉट गारंटी ऑफ indefinite revenue without change or innovation in this particular one. ठीक है. So these are the stages. Please आपका stages के around their features and all, they are very very important. ठीक है. Next one, which of the following statement about these stages in a new product development cycle are true? ठीक है. Product development cycle. So again आपका you have so many statements. So please go through the statement and try to answer this particular one. Everyone, guys. All options are not visible in this one. Okay. अच्छा, anyone else is also facing issue आपका? ठीक है. In this, with this, are you sir with this particular question? I guess this is visible. I can see on my mobile. I'll just check in the laptop also. अच्छा, okay, it was for previous question I guess. ठीक है. But in this particular case we can see it easily I guess. ठीक है. राइट है, यहाँ पे सही है ना? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन के साथ आपका. So what will be your correct answer, guys? We have product development cycle. Just assume this question is for 2 marks. तो आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? ठीक है. So this is a 2 marks question. Assume कि this is in your examination, it is for 2 marks. So are you able to handle this question or not? New product idea can only be generated from external market research and customer feedback. देखो बहुत आसान है. It can be आप not only आपका external, it can be internal also. ठीक है. कोई जरूरी थोड़ा हम external market research से ही करेंगे. ठीक है. So idea screening involve evaluating whether the new product align with the company's existing infrastructure and business line. ये हमने कल भी डिस्कस किया था, सेम चीज आपका. ठीक है. तो स्टेटमेंट 2 विदाउट एनी डाउट इट इज 100% true. ठीक है. In concept testing, feedback is gathered solely from the internal stakeholders to assess the product concept. It can be external also. Internal, external, जैसे regulatory sandbox we use. So this is wrong आपका. Business analysis and market research analysis focus on evaluating the product viability from both a financial and आपका customer retention perspective. True आपका. ठीक है. The actual product development stage is purely based on data gathered from the market analysis with no consideration of customer feedback. Customer feedback is also required. Test marketing involve launching the product in selected market to gather further insight before full scale launch. Again, आपका true. The success of new product developments depend on how effectively customer ideas are converted into profitable product and that align with the business goal. आपका again true. ठीक है. So 2 4 6 7 2 4 6 7. So option A only should be right answer for this particular question. ठीक है. A होगा ना correct answer आपका? Yes. Very good JP sir. आपका आशीष sir and we have Markan. Yes. Very very good guys. ठीक है. जो लोग आपका participate करें, मीन्स लाइक व्हाट आई वांट कि थोड़ा सा ना रीडिंग्स आपका डेवलप कीजिए. व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस इन पास्ट 3 पेपर कि पेपर विल बी लेंदी, तो वो सारा चीज आपका बहुत लेंदी होगा. एंड इफ यू बिल्ड दैट हैबिट ना कि यार ठीक है, दिस अगर हम शॉर्टकट छोटे वाले क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे तो उतना सही नहीं जाएगा चीज. ठीक है. सो दिस वी हैव डिस्कस अर्लियर आल्सो इन आवर कॉन्सेप्ट क्लास. आइडिया जनरेशन, देन आपका स्क्रीनिंग, देन आपका कॉन्सेप्ट टेस्टिंग. ठीक है. बिजनेस एंड मार्केट एनालिसिस, आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्ट मार्केटिंग एंड आपका कमर्शियलाइजेशन. सो दीज आर द स्टेजेस विच जनरली इन्वॉल्व इन द ओवरऑल प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल आपका. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन गाइज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंस्ट्रेंट इन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. ठीक है. अब कोई नया प्रोडक्ट हम लोग लेके आ रहे हैं तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं. ठीक है. सो इफ वी आर मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ चेंज, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं चेंज के अंदर. So resistance from staff can arise due to fear of increase of workload or relocation. It can be ना. ठीक है. तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल हाँ, इसको आंख बंद करके आपका हाँ लिख दो. ठीक है. कोई दिक्कत नहीं इसमें.
a wide and a wide and unwidely existing product range encourage bank to focus more on product pruning than the developments. It can be product pruning and then developments. It can be a issue also. मतलब लाइक इट इज समथिंग आपका कि कैसे हम लोग लाइक वाइड एंड अनवाइडली एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट रेंज आपका एनकरेज बैंक टू फोकस more on product appearing than the developments आपका like we already have so many products in our bucket. Now we are adding one more, so how we'll make that particular fit in the system और किस तरीके से उसका dealing होगा and all. So that can be an issue. Then we have ideation in product development always lead to successful product with the strong business potential. Sometimes ideas are good, but execution or the overall development is also very important part, not only idea. So aapka I'll not go with this particular one. This is a part, but not it like our overall success is not only depend on the idea itself. It is aapka how we execute that particular one and how what feedback we have from the customers, or that is also known as the customer acceptance. So customer acceptance is also must in our case. So 1 and 2 should be right answer for this one. Not all ideas can be converted into viable product with business potential also, the other arguments or the other side of argument also. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन गाइस, थोड़ा सा हैवी स्टेटमेंट्स है, सिचुएशन है, ध्यान रखें. ऐसा पीपीबी में आपने बहुत एक्सपीरियंस किया है and I hope this is visible to everyone. So XYZ Bank have been observing intense competition in the retail banking segments. To stay ahead, the bank initially offered standard services like saving accounts, term deposit. Over time, they started including features such as passbook, checkbook, this. Okay. So you have to apply the Theodore Levitt. Which of the following correctly match XYZ Bank's offering with the respective stages आपका, ठीक है? Anyone who know about this particular one, ठीक है? Anyone who know about this particular question, guys? So bank saving account. So the sequential development is around आपका saving bank accounts, saving bank account, term deposit. Over time they started with the so you'll start with the passbook. What they like, they are moving out from the traditional. So first the development was this आपका passbook. Apart from this, then we have like what they have come up with the meet of the customer. Later they enhance the doorstep banking is the second one. What this XYZ bank did to develop this one. Which generally comes under the expected banking. Now they are planning to launch cardless services, ATM banking and kiosk of corporate office in-house societies, allowing customers. So this is augmented services आपका. तो cardless services आपका कहाँ पे है? आपका cardless product and all. So see, आपका expected product, traditional is the expected product. So traditional आपका, this is expected product from the bank. Then we have second one is your doorstep, which generally comes under the आपका doorstep. It should come under which category? It is comes under the आपका expected. Then we have it should come under the augmented product. And third one आपका generic product. So this new आपका doorstep or आपका even sorry not doorstep, this final आपका kiosk cardless services, this is आपका generic new generic products and all. Anyone which generally match this particular one, passbook and checkbook expected. Option D is meeting fine. Potential term is the again traditional one. Cardless ATM.
कार्डलेस एटीएम इधर जेनेटिक, हाँ ऑप्शन डी शुड बी वन, ठीक है. सी दिस, व्हाई ऑप्शन डी? पासबुक एंड चेकबुक एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, डोर स्टेप चेक कलेक्शन आपका ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, एंड कार्डलेस एटीएम्स withdrawals, these are the potential products where they are generally reading the overall one. Yes, हाँ D will be the answer. Yes, correct है 100% आपका, ठीक है. So see, very nicely designed question guys, ठीक है. ऐसा क्वेश्चन आपको वहां पे देखने के लिए मिल सकते हैं. तो they can ask this particular question in like about the expected product, आपका augmented product और आपका potential product also, ठीक है. उस तरीके से भी हो सकता है और आपका how they can ask with a story also, ठीक है, जैसे आपको वहां पे देखने के लिए मिला, ठीक है. When you'll go to the promotional examination ना, when we used to give the training for the promotional examination scale 4-5, तो वहां पे ना ऐसा कुछ आपके सिचुएशन होते थे आपके करिकुलम के. But nowadays, like in JIV itself, they are including these kind of things. So we have to be ready for these kind of things also. Product policy in banking are correct. Okay? Yesterday only we discussed around this particular one. 9 statements हैं. Statements को देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना है guys. ठीक है. सो जल्दी से आपका देखिए क्वेश्चन को एंड आंसर कीजिए, ठीक है. सो प्रोडक्ट पॉलिसी इन बैंकिंग आर करेक्ट. सो यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट. What will be your correct answer? One by one. चलो एक एक करके चलते हैं आपको. So product policy involve decisions such as product differentiation and packaging. 100% true. ठीक है. Second one is आपका all customer segments should be offered customized product. No. आपका कस्टमर सेगमेंटेशन हम इसलिए करते हैं कि आपका कौन सा प्रोडक्ट इज सुटेबल फॉर कौन से पीपल, ठीक है. सो दैट इज रॉन्ग, आपका ऑप्शन 2 इज रॉन्ग, ठीक है. अप्रेजल ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हेल्प phase out outdated or underperformed product. 100% appraisal means like we are evaluating the existing product कि हाँ क्या strength है, क्या weaknesses and all. So innovation का scope है या इनको आपका phase out कर देना चाहिए. Product differentiation is only selling a proposition. Sorry, I mixed this one. Product differentiation is only possible when no other bank offer a similar feature. No. Product differentiation is like if you have this kind of thing, that means you have monopoly. Two banks, they are selling same product, so how our product is different from the others? USP क्या है हमारे उसकी? This is wrong, ठीक है. USP stand for unique selling proposition, ठीक है. Statement 5 आपका जो कि correct है, which highlight the specific advantages of the product. 100% true, ठीक है. Next one आपका positioning is about selecting the USP that can lead to higher sale, आपका बिल्कुल सही, ठीक है. Branding has no significant impact on product awareness among customers. नहीं, it has, ये आपका wrong है, ठीक है. Too many product variants may confuse customers and require product planning. This is true, ठीक है. Bank can use branding strategies like giving catchy names to product for the better positioning. True आपका, ठीक है, जो हम लोग करते हैं. तो क्या है करेक्ट आंसर? 1 then 3 then 5 6 1 3 5 6, ठीक है. हाँ, तो पहले यहीं से आंसर बन जाता है. ए ऑप्शन शुड बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है. क्या होना चाहिए आंसर आपका? सी. ओके, जेपी यादव सर सेइंग ऑप्शन सी. 6 इज आल्सो करेक्ट, ठीक है. 1 3 5 6. अच्छा, ओके. 1 3 नहीं, 4 इज रॉन्ग आपका, ठीक है. Product differentiation is only possible when no other. No, product differentiation is something. Let's say there are two banks, both are selling credit card. So how our credit card is different from your credit card? So that is the only differentiation, na? And we have to clearly communicate that differentiation. Ki हाँ, if with this you will get this much of cashback or whatever offers we generally run on our product and all. ठीक है. So A should be right answer for this one. Correct है. तो आपका A is the right answer for this particular one.